Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's topic is 10.5 applications of different sounds. How different sounds being generated are being applied by us. Sounds are very important in life. You have to remember this thing, that sounds are very important in our lives because it helps us to convey, and sometimes certain sounds help us to be warned against certain threats or dangers. बाज़ का कोई ख़तरा होता है तो उसके लिए भी आवाज़ बनती है. मसलन हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई हॉर्न आपको देता है कि बच जाओ, आगे से नीचे आ जाओगे, वो भी दैट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साउंड. सो ओवर हेयर या किसी जगह आग लगे तो अलार्म बच जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स. क्योंकि हॉर्न जो बजता है वो ख़ास मखसूस बजता है कि आवाज़ देता है. इसी तरीके से बाज़ों का सैलाब की वार्निंग देने के लिए, जहाज़ों के अटैक की वार्निंग देने के लिए सायरन्स बजते हैं, वो भी एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स है. Over here now we will be discussing some of the applications of different sounds. मुख्तलिफ किस्म की जो आवाज़ें हमने आम जिंदगी में डाली हुई अपने, उनको हम स्टडी करेंगे. ओके, दोबारा आपको बताऊं ताकि आपको तमीज़ समझ आ जाए. प्लीज़ अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन. Sounds are very important in our life. How they are important? Because they warn us of dangers and they also warn us of certain threats. For example, suppose there is a fire, so fire alarm gets, starts sounding it, or there is an aircraft. Now, doorbell. Where does the doorbell help you? Suppose a doorbell rings and this sound comes into your ear. What does this sound indicate? It indicates that somebody is at the door, somebody has come to visit you, and you need to go to the door and find out who he is. So doorbell is an application of sound, and the doorbell helps you to go at the gate and meet the guest or visitor whosoever has come. So doorbell is an indication that someone is at the door. Telephone. When the telephone bell rings, it attracts your attention. And this, what does it mean? It means that you have to attend the phone call because somebody is calling you and wants to discuss something with you or wants to have a little bit of talk with you. So telephone is also an application of different sounds. 3. Security alarm system. Now this is an important system, security alarm system. Almost every school, college, and every industry and departments, etc., they have some security alarm system, and this warns you, it alerts you, the people, that some kind of danger is coming. यानी कोई खतरा किसी जगह, अल्लाह ना करे कोई अटैक हो रहा हो और वहाँ पे कोई और हादसा पेश आ जाए, तो फिर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बचता है कि भाई इस बिल्डिंग को खाली कर दो, इवैक्यूएट कर दो और सेफ एरिया में चले जाओ. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ द साउंड सिस्टम. देन यू हैव द सायरन्स. सायरन्स जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब कोई एयरक्राफ्ट वार्निंग होता है, कोई एनिमी अटैक आ रहा होता है, तो सायरन बजते हैं. फ्लड्स खुदा न खास्ता आ रहे हो, फ्लड का पानी बड़ी तेज़ी से बहता हुआ आपके शहर में आ रहा है, आपको वार्न करते हैं सायरन्स के ज़रिए कि भाई अपनी जगह खाली कर दो और सेफ जगह पर चले जाओ ताकि आप सैलाब के पानी की जद में ना आ जाए. सो the siren, it warns us about danger. It gives you, them various kinds of dangers, and the siren warns you. A radio, this also gives you good sound. It's also an application. So it's an application of sound. So radio, it gives you news, and it gives you music and entertainment also. Then you have the smoke detectors. A smoke detector जो है वो किसी बिल्डिंग में लगाया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उस आग को से बचने के लिए आप बाहर निकल जाए. सो स्मोक डिटेक्टर, इट प्रोड्यूसेस अलार्मिंग बीप्स ऑन डिटेक्टिंग स्मोक और फायर. सो अगर किसी कमरे में आग या स्मोक लग जाए, आ जाती है तो अल्लाह ना करे, तो वो फिर वो स्मोक जो ही उसके डिटेक्टर के पास जाता है तो फिर वो अलार्म देना शुरू कर देता है. एंड इट वांट्स पीपल टू गो इनटू सेफ प्लेसेस. स्टीरियो प्लेयर आल्सो इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साउंड, एंड दिस ट्राइज टू, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स or to listen to your favorite qirats or Quran, whatever, you have to listen to it. So this is also one of the applications of sound. Now, after covering these different applications of sound in which we have studied, various kinds of sounds that are important in our life. The first one, we talked about the door alarm, and then we talked about telephone, security alarms, sirens, radio,
स्मोक डिटेक्टर्स एंड स्टीरियो प्लेस। सो इस पोर्शन में जो हमने चीज़ पढ़ी है वो सिर्फ यह पढ़ी है कि एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स क्या है, और साउंड हमारी ज़िंदगी में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। साउंड के ज़रिए हम अपने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड सम अप्लायंसेस भी हम यूज़ करते हैं जो हमसे कम्युनिकेट होती है, हमको वार्न करती हैं सर्टन चीज़ों का कि ये कोई डेंजर आ रहा है या थ्रेट आ रहा है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ होती है? आपने सुना होगा इसकी आवाज़ की आम जिंदगी में भी। पीपल दे कीप सेइंग आई वांट टू गो टू द हॉस्पिटल टू गेट द अल्ट्रासाउंड, एंड इट्स अ कॉमनली यूज्ड वर्ड। सो व्हाट इज एन अल्ट्रासाउंड? सो यू मस्ट बी नोइंग इट। Sound waves above the frequency of 20,000 hertz are called ultrasounds. यानी अल्ट्रासाउंड्स क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जो 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज़्यादा की होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। 20,000 साइकिल्स पर सेकंड की आवाज़ हमारा कान नहीं सुन सकता। वी डिस्कस्ड yesterday that the audible range of the human ear is from 20 hertz to 20,000 hertz per second. Above 20,000 hertz जो साउंड्स आती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो साउंड वेव्स लेस देन 20 hertz होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासाउंड्स। ओके, तो ये रेंज है ह्यूमन ईयर का, यानी 20 हर्ट्ज से लेके ये 20,000 हर्ट्ज तक का। इसके जो बियॉन्ड की, इससे जो ऊंची फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और इससे कम 20 साइकिल से कम की जो होती हैं उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड्स। सो व्हाट आर इंफ्रासाउंड्स? Infrasounds are those frequencies which are less than 20 hertz. अब ultrasounds are used, ultrasounds के बेशुमार फायदे, they are used in the hospitals and they are also used in engineering. Suppose a certain building has developed cracks in concrete, you can use ultrasounds to find out if there are any cracks or any cavities in it. Similarly, ultrasounds are used in heavy machinery to find if there have been any cracks inside where the human eye cannot see it. So ultrasound has applications in medicine, ultrasound has applications in engineering, in industry. Now there is a small, a kind of a quiz which forces you to think beyond what you have learned. साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम। आपने ये सुना है, पढ़ा है कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक किसी न किसी किस्म का मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। मीडियम किस किस्म का? सॉलिड या लिक्विड या गैस का कोई मीडियम हो। इफ़ देयर इज़ नो मीडियम देन साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल। अगर इस जगह जहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से हवा निकाल दी जाए तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकेगी। सो साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम। साइंस फिक्शन मूवीज़ में आपने देखा होगा अक्सर औक़ात कि स्पेसशिप्स जो है ना वो एक्सप्लोड होती है खला में, एंड यू हेयर दिस साउंड। ये क्या ये बात सच है? दिस इज़ द क्विज दैट वाज पुट टू यू। क्या ये बात ठीक है कि उसकी आवाज़ आ सकती है? तो जो इसका आंसर है वो ये है कि नो, साउंड कैन नॉट बी हर्ड इन स्पेस। स्पेस में किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। स्पेस में कितने किस्म के वहाँ पे ऊपर मुख्तलिफ सितारे पैदा हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ सितारे एक्सप्लोड कर रहे होते हैं, उनकी बेशुमार आवाज़ें होती हैं, बट यू कैन नॉट हियर देम। बेशुमार उसमें टकराते भी आपस में हैं। यू कांट हियर देम बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम इन बिटवीन, देयर इज़ नो मटीरियल मीडियम। सो द आंसर ऑफ दिस क्विज ऑन पेज 113 इज दैट दिस इज अनरियलिस्टिक। साउंड वेव्स कैन नॉट बी हर्ड in space. Okay, now we come to the exercise, and this is a very important exercise. Please go over it and I will revise for you. Okay, now we come to the exercise of this chapter. Okay, chapter 10 sound waves की exercise है. The first question is, complete each of the following sentences by writing the correct terms. The lowest points of a transverse wave. Transverse wave का lowest point क्या होता है? ये एक transverse wave है,
remember what I talked to you about transverse waves. Transverse waves are those waves in which the particles of the medium move in a direction perpendicular to the direction of motion of wave. यानी ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? वो वेव होती है जिसमें उसके ज़रात जो है, मादा के ज़रात, वो 90 के ज़ाविये पे मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन की निस्बत से. सो दिस इज व्हाट इज द अपर. इसमें लोवेस्ट पॉइंट ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है? द लोवेस्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रफ. इसको ट्रफ कहते हैं. ओके, द हाईएस्ट और द हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? इट्स नोन एज पिच. द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड. 1 सेकेंड में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट्स नोन एज स्पीड. ए कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन कंबाइन टू फॉर्म, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलकर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनते हैं. एंड ए मटेरियल थिंग थ्रू विच अ वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम. मीडियम क्या होता है? वो मटेरियल बॉडी जिसमें से वेव ट्रेवल करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग. सही जवाब दो इसका. व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब कोई वेव मीडियम में से गुजरती है तो 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सी ठीक है? तो ब्रावो वाली ठीक है कि एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दूसरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज. स्पीड ऑफ साउंड जो है कितनी है हवा में? वो 330 मीटर्स पर सेकेंड है. दिस इज डी पार्ट. पार्ट डी जो है वो इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव इज. 4 ऑप्शन दी हुई हैं. ए साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. And then the question number 4 is objects that vibrate slowly have a pitch that is low. तो जितनी frequency low होगी उतनी उसकी pitch low होगी. ओके, सो इसका आंसर क्या है? लो. यहाँ पे आता है. क्वेश्चन नंबर 5 है साउंड वेव्स ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू. अब ये आपके पास दिस गिवन एन ऑप्शन के साउंड वेव्स क्या सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में या हवा में, किस में से सबसे तेज गुजरती है? तो साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स. सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है. और इसका आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर आप खड़े हुए हों, रेलवे ट्रेन आ रही है, दूर से आपको नज़र नहीं आ रही, आप कान लगा के रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है ना अपना कान रखें. अगर ट्रेन जो है उसका टाइम हो रहा है, आप चाहे आंखों से नज़र ना भी आती हो, तो रेलवे ट्रैक पे उसकी वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी. बिकॉज द साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग फास्टर इन सॉलिड्स. तो रेलवे ट्रैक का जो उसकी लाइनें बिछाई होती हैं वो लोहे की, वो स्टील की होती हैं, दैट इज सॉलिड, सो यू कैन हियर देम. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट साउंड वेव्स ट्रैवल मोर क्विकली इन सॉलिड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3 ये है. ओके, ये कहता है स्केच ए ट्रांसवर्स वेव. एक ट्रांसवर्स वेव बनाओ एंड लेबल अ क्रेस्ट. और क्रेस्ट बताओ किधर होगा, उसमें ट्रफ किधर होगा, वेवलेंथ किधर और एम्पलीट्यूड किधर. सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर मूविंग एट 90 डिग्रीज टू डायरेक्शन ऑफ वेव. ओके, सो द हाईएस्ट पॉइंट द वेव इज नोन एज अ क्रेस्ट. तो ये क्रेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट, मीन पोजीशन की निस्बत सबसे ऊंचा. सबसे निचला पॉइंट जो है वो ट्रफ है. द डीपेस्ट पॉइंट इज ट्रफ. और क्रेस्ट से लेके ये एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का फासला दैट इज नोन एज वेवलेंथ. सो दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द क्रेस्ट, दिस इज द ट्रफ. एम्पलीट्यूड चौथा सवाल उसका क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड शो करो. तो द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन of a crest is known as amplitude or of a trough. So उसका मैक्सिमम फासला अपना मेन पोजीशन से उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. सो ऑल 4 हैव बीन ड्रॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ क्या होती है? दिस इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर जो है वो मैंने लिख दिया पेज 108 पे है. 2 कंप्रेशंस या 2 रिफ्रैक्शन, रेयर रिफ्रैक्शन के दरमियान का फासला इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट साउंड्स इन अ डेली लाइफ. यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस का नाम लें जो कि मुख्तलिफ साउंड्स यूज होती हैं. तो उसका जो है जवाब क्या है 2 का, पेज 108. ओके, ये 1 था, ये 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है. व्हाट मेक्स सम साउंड्स लाउडर देन द अदर. तो पेज 113 के ऊपर देखो क्या चीज़ जो है वो बास साउंड्स को दूसरे की निस्बत
ज़्यादा ऊंचा हम सुनते हैं उसको, तो वो किस वजह से होती है? व्हाट इज़ द रीज़न? एम्पलीट्यूड इज़ द रीज़न, बट द आंसर यू विल टू फाइंड इट आउट फॉर मैं बस चेक करूँ वहाँ से, एम्पलीट्यूड मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ओके, व्हाट मेक्स सम साउंड्स louder than others? Amplitude makes some sounds louder than other. What is the relationship between frequency and pitch? पेज 111 पे, पेज 111 पे इसका आंसर देखें कि क्या रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और पिच के। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पिच हाई होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी लो उतनी पिच लो होती है। लेकिन इसका आंसर आप बुक में पेज 111 पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, हाउ डज साउंड ट्रैवल? साउंड कैसे ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह? पेज 107 पे इसका आंसर देखें। ओके, कैसे जवाब देंगे? कंप्रेशंस पैदा होती हैं बोलने से इन द एयर जॉइनिंग एयर, उससे रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, और इस तरीके से ट्रैवल करती है। बट यू कैन लुक एट पेज नंबर 107 टू फाइंड द आंसर एंड टू लर्न इट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोनों को कंपेयर करो, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? पेज 106 एंड 107 के ऊपर। इन ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं उसकी डेफिनेशन लिखो, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखो। ट्रांसवर्स वेव में शो करें क्रेस्ट और ट्रफ को, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेफ्रैक्शंस को शो करें। ट्रांसवर्स वेव में शो द वेवलेंथ बिटवीन the crests, and in the longitudinal will show the wavelength in case of a longitudinal wave. Now question number 5, what type of waves are sound waves and how do they transfer sound energy? कौन से what type of waves are sound waves? Question number 5 पेज 107 पे देखिए, what types of waves are sound waves? कौन सी होती हैं? Longitudinal waves, sound waves are longitudinal waves. And how do they transfer sound energy? ये again पीछे आप इसको देखें उसमें। Okay, now the next question is question number 6. Describe loudness and pitch of sound. Page 110 and 11111. यानी 110 111 पेज पर देखें कि loudness और pitch क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। loudness जो है वो डिपेंड करती है on amplitude, और pitch किस पर डिपेंड करता है? frequency. राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, पेज 110 पे देखना। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? ऑडिबल क्या है? जो आवाज़ आप सुन सकते हैं। कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं, किन फ्रीक्वेंसी की आप सुन सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 110 पेज पे लिखा हुआ है, वो है फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स पर हम आवाज़ें सुन सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? पेज 109 पे देखें, स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर होती है? पेज 109। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप बिलो। ये कॉन्सेप्ट मैप बनाया कि साउंड जो है ये कौन सी टाइप्स ऑफ वेव्स है? ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फैक्टर्स क्या हैं? साउंड डिपेंड करती है किस पर? वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, स्पीड के ऊपर। वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, और स्पीड ये इसका मैप बनाया था उसने, कहा इसको फिलअप करें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, and I expect you to please go over it and make notes of this thing, so that for the next term, when the next term will start, you will again have a test for that, उसके लिए आप तैयारी कर सकें। Thank you very much.